Good morning, everyone. It's your English class, and today we are going to study our next chapter of our grammar book, that is Verbs Non-Finite Forms. So this is chapter number 11, and page number you have to open 84. So let's start the class. Finite and non-finite verbs. Look at these sentences. I go to school to study. He goes to the school to study. In sentence 1, the verb go has I for its subject and it agrees with it. In sentence 2, since the subject is he, we have used the verb goes. In these sentences, the verb is limited by the person of the subject. So, dear students, here we have to understand that in the tenses, like some main verbs, we use that after the subject. So, according to the number of subject and according to the person of subject and according to the tense, we keep changing the verb, means we keep changing the forms of verbs. So which verb are changed, those verbs are called finite verbs, and which verbs are not changed according to the subject, according to the number of subject and according to the person of subject and according to the tense, that verb is called non-finite verbs. तो जब हम सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो जो वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन, नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और टेंस, अगर कोई वर्ब सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन या सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए तो उस वर्ब को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, और अगर ऐसी वर्ब जो चेंज ना हो उनको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, right? In these two examples you can see that in first example we have used I go. A tense is simple present in both the sentences, but in this our subject is first person and in second sentence our subject is third person, right? So that's why we have used here go and we have used here goes. So these verbs have been changed according to the person of subject. But see these verbs to study, to study. We change the main verb. So these verbs are called finite verb because which verbs are changed according to the number of subject and according to the person of subject, those verbs are called finite verbs. And which verbs are not changed according to the subject, means like according to the person of subject and according to the number of subject, that is called non-finite verb. तो इन दोनों सेंटेंस में गो का गोस बन गया क्योंकि उसमें सब्जेक्ट चेंज हो गया, यानी कि इसमें फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो पर्सन सब्जेक्ट का फर्स्ट है, इसमें थर्ड पर्सन है तो उसकी वजह से वर्ब्स चेंज हो गई हैं। तो जो वर्ब्स चेंज हो जाएं उनको बोलते हैं फाइनाइट। बट ये वर्ब्स देखो टू स्टडी एंड हियर आल्सो टू स्टडी, यहाँ पे ये चेंज नहीं हुई। तो ये जो वर्ब्स जो होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, ना ही सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो उन वर्ब्स को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर? Now look at these two sentences. He goes to school to study, singular subject, that is singular verb. They go to school to study, plural subject, plural verb. So dear students, here you have to see that our subject is third person but number of subject is singular, but here number of subject is plural. He is third person singular and they is third person plural. But you can see here according to the number of subject we have changed the verb, like goes, here we have used go. But to study in both two sentences we have used to study, means like these verbs, like to study, these verbs are called non-finite verbs, and go, goes, these verbs are called finite verbs. So simply you can understand which are the main verbs, those are called finite verbs. In these sentences, the verb is limited by the number of subject, means which verb is limited by the number of subject, that is called finite. यानी कि जो verb subject के number या person या tense के according change हो जाए उसको बोलते हैं हम finite verb.
A verb that is limited by the person and the number of subject is called a finite verb. Same thing I have told you, but the sentences given above have another verb also to study. This verb does not have a subject. It simply names the action denoted by the verb study. Its form does not change in all the sentences above. It has the same form to study. The same thing I have told you, like main verb is called finite verb, and other verbs which are not changed according to the number of subject and according to the personal subject or according to the tense of the sentence, that is called non-finite verbs. A verb not limited by person number is called non-finite verb. Non-finite verb do not have any tense forms. Same thing I have told you. Now, dear student, basically in this chapter, we have to focus on non-finite verbs. So finite verbs, we have understood that, which are the main verbs, like which verbs are changed according to the number of subject and according to the person of subject, and those verbs are called finite. And now I am telling you here, we have to focus basically on non-finite verbs. Clear? So kinds of non-finite verbs. There are three groups of non-finites. So three types of non-finite verb are there. First is called infinitive, the infinitive. Second is called the participle. Third is called the gerund. Infinitive, participle, gerund. Right? So these three types are there of non-finite verbs. Next, to steal, to forget, to write, present infinitive. So dear students, whenever we put to plus root form, that is called infinitive and that is part of present infinitive. Further, infinitive verbs are divided into two parts. One is called present infinitive and second is called perfect infinitive. In present infinitive, we have to use to plus root form. To steal, to forget, to write, like we can say also to plus first form. And in the past infinitive, to have stolen, to have forgotten, to have written means to plus have plus third form we have to use. To plus have plus third form. That is called perfect infinitive. That is a part of infinitive. Clear? Next, let's talk about the participle, like stealing, forgetting, writing, present participle. So dear students, further participle is divided also in two parts. One is called present participle and second is called past participle. In the present participle, we use ing form like stealing, forgetting, writing. These verbs are called present participle. And if you use third form like stolen, forgotten, written, those are called past participle. Means ing form is called present participle and third form is called past participle. Now let's talk about the gerund. Gerund means like means using the ing form, stealing, forgetting, writing, right? So whenever we put ing form in any verb, so that verb either called is participle or gerund. So what is the difference between participle and gerund? In both we use ing form. This difference will be described like later. I will let you know that in coming slides. But here just you have to understand three types of non-finite verbs are there. First is called infinitive, second is called participle, third is called gerund. Infinitive, participle, and gerund. Further, infinitive is divided into two parts, that is called present infinitive and perfect infinitive. Present infinitive and perfect infinitive. And participle is also divided into two parts. One is called present participle, second is called past participle. Present participle, past participle. And third type of non-finite verb is gerund, right? Further, we will study about these types of non-finite verbs. The present participle and the gerund have the same form, what we normally describe as the ing form, but their functions are quite different. The participle is partially a verb and partially an adjective. The gerund is partially a verb and partially a noun. Sorry, partly a noun, not partially, right?
So dear students, here we have to understand when we say about present participle, that is partly a verb, means कुछ part तो उसका verb का होता है, उसको verb भी बोल सकते हैं और वो adjective की तरह भी काम करते हैं, बेसिकली उनके function के हिसाब से, यानी कि जिस तरह उनको यूज किया जाता है उनके हिसाब से उनको प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरेंट कहा जाता है, राइट। वो पार्टली तो एडजेक्टिव होते हैं और पार्टली वर्ब, और उनको पार्टली नाउन या पार्टली वर्ब भी बोल सकते हैं, राइट। तो जो वर्ब आईएनजी जिसके साथ लगा हो, अगर वो वर्ब किसी नाउन का एडजेक्टिव बना हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अगर वो वर्ब जिसमें आईएनजी लगा है किसी नाम की तरह यूज हो रहा हो तो जेरेंट कहलाता है। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन वी पुट आईएनजी and we use that verb as a noun, that is called gerund. Gerund means a noun, right? But if you put ing after any verb and we use that verb as an adjective, so that is called present participle. Okay, I will make you understand this point with some examples. Clear? Suppose, dear students, you say that you have a doll and you say that it is a beautiful doll. It is a beautiful doll. So we know that beautiful is an adjective here, but instead of beautiful, you use ing form and you say that it is a singing doll. It is a singing doll. यानी कि गाना बोलने वाली डोल है. तो now singing is here as an adjective. तो सिंगिंग जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है वहां पे, क्योंकि वो उसको क्वालिफाई कर रहा है कि वो किस तरह की डोल है, एक सिंगिंग डोल है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक ब्यूटीफुल डोल है, तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। उसी तरह यहाँ पे सिंगिंग भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर हम किसी आईएनजी फॉर्म को किसी एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो वो कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। like I have told you, I have a singing doll, so singing is here an adjective. But when we use ing form and we use that as a noun, so that is called gerund. Suppose that I say that I like this doll. I like this doll. So doll, we know that that is an object, that is a noun. And sometimes we say that I like singing. Singing is my hobby. So singing we have used here as a subject or as an object. So whenever we use subject and object, so those words are called noun. But here ing form we have used. I like cooking. Cooking is noun here, right? I like dancing. Dancing is my hobby, right? So whenever we use ing form as an adjective, so those words are called participle. But whenever we use ing form as a noun, so that is called gerund. It depends on how we use them. Clear? Now, dear students, this exercise, like you have to do, you need to raise your hand if you know the answer. Let's read the question first. Exercise 1. Underline the verbs in the flowing passage. Write F for the finite verbs and N for the non-finite verbs. So dear students, in this passage, you need to find out the verbs. And then you have to let me know that is that verb finite or non-finite verb. I will let you know. Just you have to tell me that is finite and non-finite. Okay? Verbs मैं तुम्हें बताऊंगा कि verbs कौन कौन सी हैं। आपने just मुझे इतना बताना है कि जो verbs मैं बोल रहा हूँ वो verbs क्या हैं, finite verbs हैं या non-finite verbs हैं। Okay? So let's read the passage and find out like given verbs are finite and non-finite. Clear? So let's do this exercise. So let me do some setting so that I can see the hand of everyone. Please wait. Let me do some setting. Stay connected. Please wait a while. Let me extend the size of this box. Okay. Okay, yes, I have done it. So let's start. So playing games has never been my strong point. So playing is verb here. We have studied that ing form is partly verb and partly, that is
either participle or that is the gerund. So please let me know. Playing is what here? Finite and non-finite. आपने सिंपल ये बताना है कि वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट. प्लेइंग. मुस्कान, you please tell me. Muskan, please tell me what can be the answer. Yes, sir. Sir, non-finite. नॉन फाइनाइट. बेटा जो फाइनाइट वर्ब्स होती है ना वो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखी जाती हैं. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, क्योंकि वो टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है. ये जो वर्ब है ये चेंज नहीं होगी चाहे हम टेंस कुछ भी चेंज कर लें. तो प्लेइंग गेम्स हैज नेवर बीन माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट, राइट. तो यहाँ पे प्लेइंग क्या है? नॉन फाइनाइट. सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर बुक. Okay, so I'm telling you the answer, and soon after just completing this chapter, I will send the answer key too. So playing games has never been my strong point. So playing, we have come to know that that is the non-finite, and second is here has never been. So never तो यहाँ पे adverb होता है, never को skip कर दो. अगर has been को इकट्ठा consider किया जाए, देखो दोबारा समझो मेरे पॉइंट को. अगर हम हैज को अलग कंसीडर करते हैं और बीन को अलग कंसीडर करते हैं तो उसमें एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट है. बेसिकली होता क्या है कि ये इकट्ठा कंसीडर किया जाता है इनको, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को. ठीक है, उसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब को भी और मेन वर्ब को इकट्ठा कंसीडर करना है इस पैसेज के अंदर. तो आपने बताना है हैज बीन फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है. सो प्लीज लेट मी नो, रेज योर हैंड एंड लेट मी नो हैज बीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. Come on, dear students, please try to give the answer. Don't be afraid to give the answer. Either your answer is right or wrong, it doesn't matter. Basically, you need to participate in this. You need to show your courage that you are not afraid to give the answer. Yes. Sia and Rishabh. Sir, finite. Finite. Very good. Right answer. So that's a finite verb. देखो यहाँ पे has been change हो जाता है ना, has का have भी बन जाता है, right? So that is a finite verb. Next sentence, I have not learned even swimming although I have lived by the sea all my life. तो here have not learned, not तो यहाँ पे हमने consider नहीं करना, have learned. So have learned finite and non-finite. Who will let me know? Have not, that is finite and non-finite. Who will let me know that? Saksham, you please tell me. Saksham. Sir, finite. फाइनाइट. देखो हैव नॉट का हैज नॉट भी बन सकता है अगर हमारा सब्जेक्ट या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ये क्या है? फाइनाइट. स्विमिंग ऑल्दो, स्विमिंग, व्हाट अबाउट स्विमिंग, इज दैट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट? हु विल लेट मी नो? युग, यू प्लीज टेल मी. स्विमिंग नॉन फाइनाइट. नॉन फाइनाइट. जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ कंसीडर की जाती हैं वो हमारी फाइनाइट होती है, राइट. Next, although I have lived by the sea all my life. Have lived, that is finite and non-finite. Have lived, finite and non-finite. Who will let me know? Manika, you please tell me. Finite. Finite, because that's a combination of helping verb and main verb. Dear students, again remember this, I'm just telling you. देखो अगर मैं have lived इकट्ठा कंसीडर करता हूँ तो ये फाइनाइट है. अगर मैं have को अलग कंसीडर करता हूँ तो ये फाइनाइट और lived नॉन फाइनाइट. ठीक है, क्योंकि have चेंज हो जाएगा अगर हम उसका सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन चेंज करेंगे, परंतु lived नहीं चेंज होगा. ठीक है, परंतु यहाँ पे हमने कंसीडर इकट्ठा करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आती है या ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स, सॉरी मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनके साथ जो मेन वर्ब आती है, अगर उनको इकट्ठा कंसीडर करें तो वो फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू शुड ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ. Okay, first two sentences I have told you, so rest of you should do by yourself. Clear? Now let's come on the C point. Please down your hand, everyone. The infinitive. Now let's talk about the infinitive.
The infinitive is also referred to the as the to verb, but it can be used with the with or without to. So dear students, now we have to talk about infinitive. So this point we have understood what are the finite verbs and what are the non-finite verbs, right? Now we have to understand no, like infinitive, that is a part of non-finite verbs. So in infinitive we have to understand that to plus first form or sometimes without to, that is called infinitive form. Like if you say that I want to play, I want to play, तो want तो हमें पता है that is a finite verb है. हमें बात करनी है नॉन फाइनाइट के, तो ये हमें पता है टू प्ले क्या है, नॉन फाइनाइट है. नॉन फाइनाइट में तीन पार्ट होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंट. तो ये क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या है, इन्फिनेटिव है. तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, इन्फिनेटिव. You ought to have played. So 2 plus first form, that is called infinitive, right? तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब तो है. नॉन फाइनाइट वर्ब में आगे जिनका पार्ट बनता है वो क्या होता है, infinitive. But see here, she can play chess very well. So dear students, मैंने आपको बताया था कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं या हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उसके बाद अगर वर्ब को कंसीडर किया जाए अलग अलग, तो वो होती है नॉन फाइनाइट. ठीक है, अगर दोनों को इकट्ठा कंसीडर किया जाए तो वो होती है फाइनाइट. ठीक है, तो कैन यहाँ पे फाइनाइट है और प्ले क्या है, यहाँ पे नॉन फाइनाइट है. नॉन फाइनाइट में ये इन्फिनेटिव पार्ट है जो विदाउट टू लिखी जाती है. तो हमें यहाँ पे समझना है जो इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, परंतु कहीं कहीं हम बिना टू के भी लिख देते हैं. कहाँ पे लिखते हैं, जहां पे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं, यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड. जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हैं उनके बाद जो वर्ब्स यूज करते हैं वो नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव पार्ट होते हैं जो बिना टू के लिखी जाती है, राइट? नेक्स्ट, ही मेड मी डू द एक्सरसाइज अगेन. सो दिस इज डू आल्सो, दैट इज द नॉन फाइनाइट, दैट इज इन दिस इन्फिनेटिव. ये इन्फिनेटिव है जो नॉन फाइनाइट का पार्ट है, राइट? सो next point, when an infinitive is used without to, it is called a bare infinitive. So second point, we have to understand that, dear student, whenever we use two plus means like whenever we use without to root form, that is called bare infinitive. जब कभी हम बिना टू के इंफिनिटिव वर्ब को लिखते हैं तो उस वर्ब को बोलते हैं बेयर इंफिनिटिव. वैसे तो जो इंफिनिटिव वर्ब्स होती हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम टू प्लस रूट फॉर्म यूज करते हैं, परंतु कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर हम बेयर इंफिनिटिव यूज करते हैं, यानी कि बिना टू के वो वर्ब्स यूज करते हैं. क्लियर? Now let's understand the D point, the infinitive without to bare infinitive. So we are going to understand where we have to use bare infinitive verbs. Clear? So after modal auxiliaries such as shall, will, should, would, may, might, must, can, could, we use the infinitive without to. तो जब कभी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हैं जैसे shall, will, should, would, may, might, must, can, could, तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं इनके बाद जो वर्ब्स यूज की जाती हैं वो इन्फिनेटिव होती हैं. इन्फिनेटिव के अंदर बेयर इन्फिनेटिव होती हैं. बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है कि रूट फॉर्म बिना टू के, यानी कि टू को हटाना होता है, टू नहीं लिखना होता है. जैसे यू शैल एक्सेप्ट these conditions, you will be forced to accept these conditions. I will write to him, you should consult a doctor, you must leave tonight, she can dance. So you can see that these are the modal auxiliary verbs like shall, will, should, must, can. So these verbs are called, after that we have used the bare infinitive verbs, right? So first rule we have to understand this. After the modal auxiliary verbs we use, like which verbs we use, that those verbs are called bare infinitive verbs. Second point of this, we use the infinitive without to after these verbs like let, make, bid, dare, need, as well as after the flowing verbs of perceptions like see, hear, watch, know, feel. So dear students, here we have to understand कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं उनके बाद हमें बेयर इंफिनिटिव को लिखना होता है, यानी कि बिना टू के रूट फॉर्म लिखनी होती है. जैसे लेट का मतलब होता है अनुमति देना. मेक हम यूज करते हैं कोस्टिव वर्ब के रूप में. मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें समझा दूंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड.
राइट। बिड का मतलब कमांड और ऑर्डर, डेयर का मतलब हिम्मत करना, साहस करना, टू शो द करेज, नीड का मतलब नेसेसिटी यानी कि जरूरत होना किसी काम की, और उसके साथ साथ वर्ब ऑफ परसेप्शन है यानी कि ऐसी वर्ब जो हम अपनी सेंसेस को यूज करके ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं, जैसे सी, हियर, वॉच, नो, फील। इन वर्ब्स के बाद हमें बेयर इन्फिनेटिव वर्ब्स लिखनी होती है अगर हमें वर्ब को लिखने की जरूरत है तो, राइट। Some examples are written here. Let me try this problem. Let me try this problem. We should not write here. Let me to try this problem. Getting my point? So there is a need to write the second verb. So second verb will come here. Bare infinitive after the let. जब हमें let को अनुमति देने के लिए यूज करना होता है, जैसे sometime just at the beginning of the class I like say you let's start the class. Let's means let us start. So start is here bare infinitive. Okay, let's begin the class. Begin is here bare infinitive. So after the let we should use bare infinitive verb. Next, the teacher made me write the application. Teacher ने मुझसे application लिखवाई. So positive verb made means make we have used here. So after the make we need to use the bare infinitive if there is a need to write the verb. She made me wait for more than half an hour. उसने मुझे लगभग आधा घंटा और इंतजार करवाया. Right? Bid him leave the school at once. उसको स्कूल एकदम से छोड़ने के लिए कहो. So bid का मतलब क्या होता है, किसी को ऑर्डर करना, कमांड करना. तो bid के बाद हमें जब bid को ऑर्डर और कमांड के सेंस के लिए यूज करते हैं, bid का दूसरा मीनिंग बोली लगाना भी होता है. तो bid को जब ऑर्डर और कमांड करने के सेंस के लिए यूज करते हैं तो वहां पे हमें जो वर्ब लिखनी होती है वो बेयर इन्फिनेटिव लिखनी होती है. The director bade the unit stop shooting. You dare not touch my things. You need not wait for me. I saw him take away your purse. So these verbs you need to remember that, dear students. After that, after these verbs, we should write the bare infinitive verbs. Clear? So once again, I tell you, dear students, just understanding is not enough. I just keep telling you, you need to learn this all the things. You need to memorize the things, which are the verbs. After that, we have to write the bare infinitive. Understanding will help you to memorize the thing, but ultimately you have to memorize, you have to grasp the things. Otherwise you will not get the fully benefit of education. You need to understand the things. After that you have to cram the things, you have to learn the things. I heard him cry with pain. That's a verb of perception. I felt something hard touch my cheeks. So felt is also verb of perception. यानी कि ऐसी verbs जो जिसमें सेंसेस को यूज करके, हमारी सेंसेस होते हैं देखने की सेंस, सुनने की सेंस, उनको यूज करके कुछ ऑब्जर्व करते हैं, तो उनके बाद अगर मेन के बाद वर्ब लिखने की जरूरत है तो बेयर इन्फिनेटिव लिखी जाती है. क्लियर? नोट. So notice the use of the to infinitive and dare with dare and need in flowing sentence. He dared to disobey the law, but he dared not disobey the laws. You need to go there, but you need not go there. So dear students, here we have to understand dare and need. About dare and need. जब dare और need को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, अफर्मेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें ना तो नोट होता ना ही कोई क्वेश्चन होता. तो जब डेयर वर्ड को और नीड वर्ड को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो तब उनके बाद हम इन्फिनेटिव वर्ब को यूज करते हैं, यानी कि टू प्लस रूट फॉर्म को यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे वो वर्ब्स की तरह यूज होती हैं. परंतु जब हम इनको नेगेटिव फॉर्म में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो उनके बाद हमें बेयर इन्फिनेटिव वर्ब यूज करनी होती है. नाउ यू कैन सी हियर दैट्स अ सिंपल सेंटेंस लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस. ही डेयर्ड टू डिसओबे द लॉस. सो डेयर्ड यहाँ पे वर्ब है, सेकंड फॉर्म यूज की गई है, यानी कि सेंटेंस सिंपल है, अफर्मेटिव है. उसके बाद डिसओबे है, वो टू प्लस रूट फॉर्म है. तो यहाँ देखो ही डेयर्ड नॉट, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज किया गया. तो डेयर और नीड को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करते हैं. तो यहाँ पे डेयर्ड नॉट डिसओबे, यहाँ पे टू नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे इसको बेयर इन्फिनेटिव की तरह यूज करना होता है डेयर और नीड के बाद, जब डेयर और नीड को हम नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं. This example also, you need to go there, but you need not go there.
तो यहाँ जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है जिसमें ना ही नोट है ना ही कोई क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पे नीड के बाद नीड को वर्ब की तरह यूज किया गया है, मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो उसके पास टू प्लस रूट फॉर्म लिखनी होती है, यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म लिखनी होती है। और यहाँ पे नीड को एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज किया गया क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। यू नीड नॉट गो देयर, तो जब सेंटेंस नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नीड और डेयर को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज कर रखा, तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव हमें यूज करनी होती है, लाइक यू कैन सी हियर। क्लियर? It should be clear that we retain to in the affirmative sentence but drop it in the negative ones. So this thing I have told you. So a finite verb and a bare infinitive have the same form. However, a finite verb can be used in various tenses, while the bare infinitive is only used in root form of the verbs. So this thing I have told you कि जो infinitive, so finite form होती हैं, verbs होती हैं, उनकी अलग अलग forms होती हैं। जो नॉन फाइनाइट्स होती हैं उनको रूट फॉर्म में यूज करना होता है बेसिकली जब इन्फिनेटिव की बात करते हैं या फिर बेयर इन्फिनेटिव की बात करते हैं, राइट? Okay, so I think dear students, it's enough for today because only a few minutes